हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का रिव्यू है रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये बहुत ही फेमस बुक है। 15 मिलियन बुक्स सोल्ड वर्ल्ड वाइड दिस बुक एंड दिस बुक इज़ ये ऑथर है वही जो बुक हमारी मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के थे, जो कि वो भी हमारी बुक रॉबिन शर्मा की थी और ये बुक उसके बाद आई थी। तो ये बुक बहुत ही फेमस बुक है उनकी और बहुत ही अच्छे तरीके, इसमें क्या ऐसी खास बात है मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुई बुक। और इसमें कंटेंट्स की मैं बात करूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कई चैप्टर्स को इतना लेंदी कर दिया गया, ऐसा नहीं। इसमें बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर्स हैं लाइफ के बारे में कि कैसे हमारी एक लाइफ में हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए और कैसे हमें उन्हें वन बाय वन सीक्वेंस में अपनी चीज़ों को जो है रिमेंबर करना चाहिए, याद करना चाहिए, उन्हें हम करते रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या अच्छी बातें हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो लाइफ लेसन्स थे द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के, उसी से रिलेटेड यही बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, राइट। सो कॉस्ट ऑफ दिस बुक इफ आई टॉक अबाउट 150 अराउंड समथिंग, यू कैन फाइंड दैट ऑन द फ्लिपकार्ट। If there is some discount, then you can find 135 or something as, so you can purchase it easily. Not very more than that price about this book if I'm talk about, because this book contains very good content, so that's enough for this, right? Yeah, let's talk about, yeah, the content. If I talk about, see here, discover your calling, every day be kind, a stranger, maintain your perspectives, and all of these, right? Yes. So let's move to the next thing. ऑल ऑफ दीज चैप्टर यू कैन सी व्हेन यू सी देयर, लगता है कि बहुत सारे चैप्टर्स इसमें है ना, बट आपको पढ़ने में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जैसे अगर बहुत कोई स्लो भी रीडर है तो वो इस बुक को 10 दिन में ख़त्म कर देगा। तो मैं तो 10 दिन बहुत कह दिया, लोग तो इसे बहुत कम ही दिन में ख़त्म कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर अ स्लो रीडर बिगिनर देन यू कैन फिनिश दिस बुक ऑन 10 विद इन 10 days, राइट। सी, so total 101 है lessons, right? Yeah, let's discover your callings. See, one chapter will be finished here and then the next chapter will be here and this chapter is also finished here and the third chapter. बहुत ही अच्छे कंटेंट है इसमें आपकी लाइफ से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। आई विल नॉट एक्सप्लेन इन दिस, बट व्हेन यू रेड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस इन दिस बुक, that's why this book is very famous and worldwide, because that has contain a very good genuine good content and listen, see, देखिए यहाँ पे एक बात कही गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। कीपिंग अ जर्नल encourage you to consider what you do, why you do it, what you have learned from all you have done, and writing in a journal promote personal growth and wisdom by giving you a form, राइट। यहाँ पे बताया गया है कि आपको जर्नल एक रखनी चाहिए अपने साथ। इसमें आपको नोट डाउन करना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है दिन में, कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसी चीज़ें सारी पूरे दिन में आपको वो रिमेंबर रहती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक साथ अपने कीप अ जर्नल, यानी एक जर्नल को अपने साथ रखें ताकि आप उसमें नोट डाउन करें कि क्या क्या चीज़ें मैंने कंसीडर करी, हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़। चलिए, इसमें ऐसे ही लाइफ की हर छोटी छोटी चीज़ों मैंने बताया गया है। हॉनर योर पास्ट, आपको अपने पास्ट का जो भी है उस चीज़ों को, उसको बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो चीज़ें। और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें। टू स्टार्ट योर डे वेल, आप अपने डे को अच्छे तरीके से स्टार्ट करें, क्योंकि यू विल नेवर बी द सेम, स्टार्ट योर डे वेल। बहुत ही अच्छी अच्छी लाइन्स हैं इसमें। लर्न टू से नो ग्रेसफुली, आपको लर्न सीखना होगा नो कहना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना किसी चीज़ को मना नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स वाई दिस बुक से दैट। एंड रिमेंबर जेन्युइन 99% इंस्पिरेशंस, केयर फॉर द टेम्पल, many chapters there tell you learn to be silent and many more chapters, right? So whole book, if I talk about, this is really a good book by the Robin Sharma. Here you can see that Robin Sharma is a globally respected humanitarian, widely considered one of the world's top leadership and personal optimization advisors. Clients include billionaires, professional sports superstars, and many Fortune 100 companies. So this is really a really great content in this book, and the simple way that he portrayed every content, every book chapter, if you read that, then you will find that everything is simply written. And if you are a beginner, you can also read this book and you will find the motivation in self from this book. So that is also a good thing about this book.
And for self-help book, if I recommend this book, highly recommend you. In the self-help book, this is one of the best book that I have ever read. My one of favorite book, you can say that, this book. So you can also, you have to definitely buy this book. Then you will understand that what is important thing about this book and why we bought this book, right? So if you like it, please subscribe to my channel and also press the bell icon so that I will give you more videos. And please share it with your friends. Thank you so much for watching us.